Assalamu alaikum everyone. So this video is about the financial statements for a company. For a limited liability company, there is not much new apart from one new financial statement, which is the statement of changes in equity. Otherwise, we start with income statement. Obviously, the objective of making the income statement is to calculate the amount of profit that the company has made or the loss, and the format for that doesn't change. You can see this format. This was already shared with you guys. You start with sales, subtract sales returns to get net sales, and then obviously you need to find out what your cost of goods sold is so that you can subtract it from your net sales. And you start that with your opening inventory, add purchases, add carriage inwards, subtract purchase returns. You get your net, you subtract your goods withdrawn by the owner, and finally subtracting closing inventory to get your cost of goods sold. Once you have your cost of goods sold, you subtract that from your net sales to get your gross profit. And then there are only two steps remaining. One is other incomes को हमने ऐड करना है, and obviously the other is subtracting expenses. Other incomes की possibilities I have listed down. These are the possibilities. Please ignore this spelling mistake. Obviously, I was typing it in a hurry. So this is decrease in allowance for doubtful debts. And then you subtract your expenses. Now, there's only one difference in the income statement of a limited liability company and let's say a sole trader. And that difference is, when you're listing these expenses, you do not take your debenture interest expense here. Alright? बाकी सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ लिस्ट डाउन कर देते हैं विदाउट डिबेंचर इंटरेस्ट. सो ये सारे एक्सपेंसेस जब आप यहाँ टोटल करेंगे उनका टोटल यहाँ पर आएगा, एंड देन ऑब्वियसली यू add your other incomes to your gross profit, and then you subtract your expenses to get your profit before interest. Alright, so interest expense हमने यहाँ पर नहीं लिया था इन expenses में, ठीक है, वो हम यहाँ पर अलग से शो कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू क्लियरली शो हाउ मच आर वी पेइंग टू द डिबेंचर होल्डर्स. सो वॉट एवर योर डिबेंचर इंटरेस्ट इज वो आप माइनस करेंगे टू फाइनली गेट योर नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो दिस इज द फाइनल फिगर दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो यू कैन सी देयर इज नॉट मच डिफरेंट अबाउट दिस इनकम स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू अ सोल ट्रेडर जो आपने पहले ही की हुई है. ओके, मूविंग ऑन, द सेकंड statement of the second financial statement that you need to make is a statement of changes in equity. Now this is something new obviously for a company. Equity, as I explained in the last video, equity consists in a company consists of the share capital, the amount that the company has in the general reserve, and the amount that was left over after distributing everything, which is called the retained profits or retained earnings भी बोल सकते हैं इसको. So by making this statement, we want to see how much the equity of the company changed during the year. So obviously this is also made at the end of the year after we are done with the income statement. So how do you start your statement of changes in equity? You started with your opening balance. This will obviously be given to you in the question. So at the start of the year, the amount of share capital will be written here, the amount of general reserve will be here, and the retained profits will be here. And this is basically the total of these three. Alright. Similarly, यहाँ पर जो नीचे balance at 30th September आ रहा है, this is also a total, right? So these are basically totals of these columns. Alright. Now this is a stepwise process. There are certain possibilities जिससे आपके कंपनी की equity change होती है. The first possibility is share issue. So when you issue more shares, obviously your equity increases, right? So अगर कंपनी ने नए shares issue किए हैं तो then that amount will be added to your share capital. You can see it will have no effect on your general reserve, neither will it have any effect on your retained profits.
सो ऑब्वियसली जितना भी आपने शेयर इशू किए हैं दैट विल बी जस्ट बी एडेड इन योर शेयर कैपिटल एंड वही फिगर आपका यहाँ टोटल में भी आ जाएगा. देन यू मूव ऑन टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द इक्विटी, राइट. हमने सोल ट्रेडर के टाइम पे पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट ओनर के कैपिटल को बढ़ाता है. So similarly, in the case of a company, whatever profit the company earns, the company's equity increases because of that. So your profit for the year is not going to affect your share capital. It is not going to affect your general reserve. That amount will be written directly in the retained profit. Why? Because जो भी आपका profit हो रहा है, let's say पिछले साल का पुराना profit पड़ा हुआ था मेरे पास 10 rupees और इस साल मेरे पास profit हुआ 7 rupees. तो now I know that I have 17 rupees to distribute. So same is the case here कि अगर year के start में मेरे पास जो भी profit था that is written here, right, the opening balance. So all the new profit that I earn, I add that to the previous profit and similarly यही figure यहाँ भी आ जाएगा in the total. Then you have transferred to general reserve. So any amount that you transferred to your general reserve will be the next step. So this is something unique. Transfer to general reserve, whatever amount you decide, your directors decide to transfer to the general reserve, obviously it will have no impact on your share capital. यानी जितने आपने शेयर्स इशू किए हुए हैं उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका. तो दैट अमाउंट विल बी एडेड टू योर जनरल रिजर्व एंड ऑब्वियसली इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर रिटेन प्रॉफिट. सो जो अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट में से ही तो कर रहे हैं. सो इसीलिए वो प्रॉफिट में से निकल रहा है एंड जनरल रिजर्व में ऐड हो रहा है, इसलिए उसका हमारे टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. वाई? बिकॉज लेट से 5 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए हैं तो 5 रुपीज़ प्लस आ जाएगा यहाँ एंड ऑब्वियसली माइनस हो रहा है यहाँ, तो नेट इम्पैक्ट उसका होगा 0, राइट. दैट इज़ वाई टोटल में हमने डैश लगाया. देन यू हैव डिविडेंड, इंटरिम एंड फाइनल. नाउ इंटरिम डिविडेंड हमने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था. इंटरिम डिविडेंड इज़ अ डिविडेंड विच इज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड फाइनल डिविडेंड इज़ अ डिविडेंड विच इज़ पेड एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड इंटरिम क्यों पे करती है कंपनी, जब उसको बताया कि उसको ईयर के एंड में पे करना है डिविडेंड. इंटरिम पे करती है कंपनी, उसके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे. वन ऑफ देम कुड बी टू मेक द शेयर होल्डर्स हैप्पियर. तो हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो डायरेक्टर्स बोलें कि यार हाँ ईयर के एंड में तो डिविडेंड देना ही है बट ड्यूरिंग द ईयर भी थोड़ा सा दे दो सो दैट द शेयर होल्डर्स आर मोर सेटिस्फाइड. So that is your interim dividend. Now whatever that dividend is, that will be given to you in the question and obviously that will be taken out of your retained profits. It is going to have no effect obviously on your share capital and general reserve. And obviously it will be subtracted from the total as well. Similarly your final dividend also is going to be subtracted from the retained profits. Now there are too many circles here, so let's get rid of them. Okay, so now you can see that the cross marks that you see, these are amounts and these hyphens or the dashes that you see, these represent no entries. Okay, so जहाँ ये है वहाँ obviously amount enter कर रहे हैं हम and जहाँ ये है obviously वहाँ हम कोई entry नहीं कर रहे हैं and at the end of the year obviously हम total कर लेंगे columns का. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिविडेंड हमने कहा है, ये डिविडेंड आपको दो तरीके से गिवन हो सकता है. इट कुड बी अ परसेंटेज बेसिस एंड ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड इट कुड बी मनी पर शेयर बेसिस. ठीक है, so for example I tell you that we've given a dividend of dollar, let's say 1 per share. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज बेसिस ऑब्वियसली कैसे होगा, लिखा होगा भाई हमने 10% डिविडेंड दिया. ठीक है, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, फाइनली आफ्टर यू आर डन विद द इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यू ऑब्वियसली मूव ऑन टू योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज़ ऑब्वियसली द बैलेंस शीट. एंड इसमें हम वही फॉर्मूला पुराने वाला अप्लाई करते हैं. यू स्टार्ट विद नॉन करंट एसेट्स, then you add current assets to find your total assets, and then obviously the next section is your equity and liabilities. Equity and liabilities may you first of all show your equity. Now
इक्विटी जो है ना वो ये है, ठीक है. दिस इज जस्ट द ऑथराइज्ड कैपिटल, सो दिस विल बी क्लोज्ड हियर ओनली. इट विल हैव नो इम्पैक्ट हियर इन द टोटल, यानी इसको हम टोटल में काउंट नहीं करते. तो ये सिर्फ हम शो करते हैं ऑथराइज कैपिटल, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ये शो भी नहीं करेंगे. यू जस्ट राइट दिस देन, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एज आई सेड अर्लियर, शो कर रहे हैं, दैट्स इट. So your ordinary share capital, your preference share capital, the amount of general reserve and the retained earnings or retained profits will be written here and उनका टोटल आ जाएगा यहाँ. और ये जो अमाउंट्स हम ले रहे हैं ऑब्वियसली वो यहाँ से ले रहे हैं, ईयर के एंड से, ठीक है. फाइनली यू हैव योर करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन यू हैव योर नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ऑब्वियसली डिबेंचर्स भी होंगे. सो यू ऐड दिस एंड दिस एंड दिस to get your total equity and liabilities. Now obviously your total assets should be equal to your total capital and liabilities, or total equity and liabilities, in order for your statement of financial position to be balanced. Alright, so not something new, बस एक ही चीज़ है यहाँ पर, this one, and the rest of it you already know. वही sole trader वाली statement of financial position है. Now what would be important is to practice at least one question where you have to make an income statement. एक question आपको statement of changes in equity का भी करना चाहिए practice, और एक question आपको statement of financial position का, so that you understand these formats. ठीक है. तो question I had already shared a question with you guys regarding the income statement, and उससे पहले मैंने एक question share किया था जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी. एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ. सो प्लीज़ प्रैक्टिस दोस, एंड ऑब्वियसली यू नो हाउ टू गेट इन टच विद मी. सो इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू मोर क्वेश्चंस एज वेल. ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.